Hello, everyone. So today I have with me Dr. Shubhi. Dr. Shubhi did her undergraduation from Lady Harding Medical College, and the reason we wanted to do this interview was to talk about something that is not really talked about as far as interviews are concerned, and that is hope. So Dr. Shubhi got a rank of 14,000 in NEET PG 2023, and in 54 days she was able to convert that rank into rank 107. What she feels is that she did not change as a person. It's her strategy did not change or anything. It's just that she became more hopeful. So over to you, Doctor. Over to you, Shubhi. Let's talk about hope. Okay, thank you so much. So this is actually my drop year, and last year I had about 23,000 rank in INICT, 13,000 in NEET. Then in November INICT I had 6,000, and this NEET I had 14. So after that 14,000 rank, which did not apparently it got worsened from last year. So that was a very bad blow to a sense of self-worth, and there were multiple breakdowns. So I think at some point of time I came to a realization that I have to give next exam and I have to give it with more hope. Like what is the worst that will happen? I'll fail again. And like that is a surgeon's mindset. I have wanted to be a surgeon. I am a surgeon. I'm bound to fail. What I do next is going to define me. So that was one realization I had. And I was solving a set before thinking all of this. And in that set, I had about 50% correct. And after 15-20 minutes I solved another set. पढ़ लेते हैं कोई नहीं देख लेते हैं जो भी होगा देखा जाएगा. So in the new set I had 90% correct, same subject, just subsequent years NICT questions. So I just realized that my problem was not with my content. My problem was how I was perceiving my sense of my own self. Like, so I had to fix that, and that was good enough realization to believe in my own self. And I put down a schedule. So there were 50 something days left, and I had to plan how to study for NICT. There were two major problems that I encountered during my previous preparations. That I was able to finish previous years, but I was not feeling satisfied by how I was covering those previous years. Like ऐसा लग रहा था कि एक बार और पढ़ने की जरूरत है, things like that. And then another problem was some of my uncomfortable subjects, which are apparently a huge chunk in INIC, like anatomy, biochemistry. I had to fix that. Pharma, I had to fix that. So in 50 days, I decided I'll give anatomy two slots, one with anatomy alone for 3 days, and then one with surgery. And then I decided biochemistry, I'll give three slots. तीन बार पढ़ूंगी याद हो जाना चाहिए थे. I had a distinction in biochemistry back in my UG, and I was good in genetics and immuno. The only problem was metabolism, and science was also fine. So I knew that there's just one teeny tiny bit that I have to fix. But if I fix this, I'll score very, very well in the exam. So I gave biochemistry like 2 days in the beginning, and 2 days, 14 days before exam, and one day, right, one day before exam. So that was for biochemistry. So two things I fixed. Then another problem was I had a lot of overwhelming emotions inside my head, like feeling like I'm not worth it, like this is not for me. Maybe I'm not capable of doing it. And all of these things come into your mind when you are solving the question as well. So midway between a question, you realize that maybe I am not capable of even solving this particular question. And your attention span goes downhill. I had to fix my attention span. So out of everything, I was like, I'm not going to lose out on technicality. I lose out on content that will not give me that much of regret compared to when I lose out on the technicality. So to fix my attention span, I literally played video games to fix my attention span. And once that was under control, I started reading questions. And every day I wake up and I tell myself that I'm going to take every question on its own merit. I'm going to read for the joy of reading. That was one of the, if this is where everything I ever wanted ends, then I'm going to go down making what makes me genuinely happy. And that is to read for the joy of reading. When you're reading, it fascinates you. When it fascinates you, you retain. If it doesn't fascinate me, I will not retain. I'll leave that topic. I'll move on to the next one. And I'll extrapolate what I don't know from what I know. So I just relied on that ability of mine because I'm reading, I'm having fun this time at this point of time. I have nothing to fear. I have nothing to lose. That kind of a feeling, like in the Dark Knight Rises, you see when that person like takes off that rope, that person is able to get out of that pit. You know, so that was me in that pit, and I took the rope off.
that kind of a situation. So I'll wake up every day and I'll train my reticular activating system to recognize reward mechanisms, like take every question on its own merit, like learn for the joy of learning. So every time I'm seeing an academic content, something inside me activates, like this is happy stuff, read happy stuff, that kind of thing. So I'm just training my brain. I know the neuroplasticity of human brain, and I'm going to exploit this to my benefit because I have listened to hell lots of motivation. I have listened to a lot of things over the years. None of that has worked. I'm really not a motivation person. I'm more of a discipline based person. Discipline works way better than motivation. And I personally believe that motivation is just a bias. Discipline is truth. Stick to it. So these are two, three principles I abided by. I knew that I had to train my brain to focus. I had to somehow force my brain to focus because this is how I'm going to fix this. My emotions, whatever has happened in the past, is not going to influence my future. It shouldn't. I am not a slave to my emotions, kind of a feeling. So these are the few exercises I did every day, and then I had a schedule in place. I had all of my notes in my hand, and I needed a good previous year questions set because I decided at that point of time I don't need random questions. I know the question bank questions are extrapolated from your previous year questions itself, but I don't need that. I need to know what was asked because I have very small amount of time. And when you have a very small amount of time, you need to know what you need to know. Like that part is very important. To cherry pick. If I have 50 days, I have to cherry pick what I have to study. And then I settled, I thought I'll do Marrow or something, but my subscription was ending. So I took Reflex. And in Reflex, you have subject wise arrangement and then you have topic wise arrangement. Like that is that's like one of the most brilliant things to do. So for example, I'm reading a particular topic and Reflex में ना ऐसे नीचे जब हम खोलते हैं ना क्वेश्चन पैनल तो दिख रहा होता है जैसे लाल लाल भी दिख रहा होता है हरा हरा भी दिख रहा होता है आई नो कि जहां पर भी आरएनए वाले सवाल आए ना वहां एकदम सीरीज से ऐसे लाल है तो आई नो कि फर्स्ट एड में जब वो आरएनए वाला पेज आता है ना एक ही पेज है एसएसआरएनए डीएसआरएनए वायरस जिसमें वो बोलते हैं कि सब ये है एक्सेप्ट फॉर दिस सब ये है एक्सेप्ट फॉर दिस वन लाइनर्स है ये एक पेज है मेरे को पता है इस पेज में मेरा जीवन बर्बाद है ये याद करना है मेरे को नहीं पता कैसे जबरदस्ती का निमोनिक बना के याद करो करना है गा के याद करो रट के याद करो रोज रोज पढ़ के याद करो like fix this part because this is where you're making errors over and over and over again and these are the errors that have come in exam that will come in your exam and there's a 10 hour 10 year sorry 10-year resource on reflex right तो 10 years के बियॉन्ड तो क्या ही पूछेगा इनसे यार तो एक ही सेट है उनके पास घुमा घुमा के पूछ रहे हैं ठीक है 10 साल के ऊपर कहाँ जाओगे तुम उसके बाद अगर कुछ आया भी होगा ना 10 साल से पहले अब रेलेवेंट भी नहीं होगा they have changed I have seen that transition because I have solved 10 years of question in reflex so I have seen that kind of transition they went from one liners to image based to long stem questions to clinical questions like it keeps getting complicated and the more complicated it gets it the more fascinating it gets somehow because I was learning for the joy of learning I have always been a person who has learned for the joy of learning मेरे को जो चीज अच्छी लगती है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी एक जेनेटिक्स पसंद है बहुत अच्छे से पढ़ी है न्यूरो पसंद है हैरिसन से पढ़ी है like things like that तो मतलब I was like ठीक है if a question makes me think it makes me happy like sometimes I come across questions no which are brilliantly framed and I feel like okay even if I don't know the answer I want to know the answer like this is fascinating that kind of a thing one thing then second thing I realized that I'm taking MCQs I had been taking MCQs very lightly कि सही करना है गलत करना है इतने नंबर ऑफ करेक्ट करना है वो वाला टारगेट था एंड देन आई रियलाइज at some point of time this MCQ is going to be a real person like a real person right in front of you and you might not even have four options in front of you so have that sense of responsibility that MCQ every MCQ is a patient there's a reason why that MCQ is in place and especially in AIMS every MCQ makes sense चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा है ना like there's a question जहाँ पे एड्स पेशेंट को डायरिया होता है स्टूल का वेट माउंट बनाते हो एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ऐसा लंबा सा ठीक है इट्स अ वर्म and they will give you four options and they'll talk about that worm and उसको कहीं ना कहीं tweak किया हुआ है डाटा about the life cycle of that worm and one of the options is pylori form is the infective form the worm is strongyloides tuberculosis अब याद हो गया तो वो है and एक option है pylori form is the infective form and what you're seeing there is rhabdity form and you need to know that part and it makes sense because what is going to infect is pylori form rhabdity form is not going to infect the surroundings so I thought I made sense of it that way कि ठीक है इसीलिए पढ़ रही हूँ ना लाइक ये बकवास नहीं है ये सवाल इट मेक सेंस इसका कोई सर पे है तो once I realized why I'm seeing that question then I realized why I need to know when I realized that I have a sense of responsibility I'll go read and I'll read with that sense of responsibility I need to know because I need to know it's not I need to know just to clear an exam तो एक वो वाला अप्रोच था तो फॉर एवरी क्वेश्चन आई डिड दैट
And then there was one more thing. I came across Rishabh sir's video because you recommended it in one of your videos कि उसका 10 days वाला strategy देख लेना, he has told it better. And आपने ऊपर ऐसे लिंक कर दिया, तो I just clicked them. आपका वाला मैंने शायद देखा भी नहीं, मैंने सीधे उनका देखा है. तो मैंने वो वाला देखा, तो his 10 days strategy, I was like, this is feasible. And I think you said or Rishabh sir said कि ENT, radio, anesthesia सीधे PYQ से हो जाएगा. दोनों ही नहीं तो मैंने कहा बस, दोनों ने बोला है. ठीक है. रेडियो में एनेस्थीसिया नहीं करना, हाँ हाँ, पीवाईक्यू तो जैसे दिमाग नहीं लगाना एम्स एग्जैक्टली. फिर कभी नहीं पूछता इनसे ज्यादा क्वेश्चन. मैंने तो इनफैक्ट हाँ, ईएनटी शायद मेरे पास टाइम ही नहीं था, कुछ भी टाइम नहीं था, मैंने ईएनटी छोड़ दी थी बिकॉज़ आई डिडंट रिमेंबर कि एक या दो क्वेश्चन मैंने भी छोड़ी है. है ना. सेम सेम. मोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा बैक अलग मैं कर लूं और लाइक वो जना मैम का BTR से ना फोटो फोटो देख लिया था सारा, तो 2-3 पेजेस से खत्म हो जाता है, 3-4-15 एएनटी 15 मिनट खत्म. एएनटी कितना बड़ा सब्जेक्ट है अगर देखने पे आओ, और इतना लो यील्ड है फ्रॉम एम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब अंडरस्टैंडेबल. वही वही सवाल घूम के पूछेंगे, वो पता है क्या पूछेंगे. इट इज लाइक, मतलब there is no point putting that much effort in ENT because वो घूम सबका हम्म. वही दो या तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन भी नहीं, दो क्वेश्चन पूछेंगे. There is हाँ no हाँ. you actually spend 2 days या 3 days to try to do ENT. हम्म. जब तो द उन्हें मोमेंट आई हर्ड दिस ना, मैंने शेड्यूल बना लिया था, ठीक है. फिर मैंने ये सुना, मैंने कहा इन्होंने तो प्लेट में परोस के लॉटरी दी है मेरे को. ठीक है. सो आई टुक ENT, एनेस्थीसिया, रेडियो, जो मेरे शेड्यूल में था, ऑफ इट, पुट इट इन वन प्लेस, एक दिन के अंदर खत्म करेंगे, सिर्फ PY पे देखना है, खत्म करेंगे. और ये जो 3 दिन खाली बचे थे ना, उसमें मैंने फिट कर दिया, एम्ब्रो डालो, न्यूरो डालो, एनाटॉमी का जीवन बर्बाद है, वो फिक्स करना है. चीज ठीक तुम है. अगर आई पानी डिड दैट. या. that were weak for you. So basically, I'll say that in these 54 days, you first changed your mindset. That I like, I will approach each question on each merit, and I won't think that I won't be able to solve this question. And I really like that story कि कि मैं अगर 15 मिनट में 50% से 90% जा सकती हूँ, तो मैं 50 दिन में भी 14,000 से 14 पे पहुंच सकती हूँ. ऑब्वियसली 14 पे या 140 पे पहुंच सकती हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है. And then you solved MCQs for the joy of solving MCQs, for the joy of learning. And obviously that's reflecting in the way you're speaking right now, to be very honest. अभी इतनी खुश होके बोलते हैं ना. I'm not kidding. The reason you're so happy right now is because you actually enjoyed this 50-day journey, I think. Obviously the या. result obviously makes it better, but I think you genuinely enjoyed the journey. What they say कि I did. When I was solving a question, no, I felt like this is basically gambling, but with knowledge, and the gratification is your success. करो gamble, legal gambling. exactly that's what when people say ना कि अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो अटेम्प्ट करना ही है तुम्हें. 33% है. करो. मैं तो 25 पे भी करती हूँ. इफ आई फील लाइक मेरे को मजा आ रहा है सवाल में, मैं अटेम्प्ट करूंगी. 25% है ना, जीरो थोड़ी है. करो अटेम्प्ट. करो मैं तो वो भी करती हूँ. हाँ, वह गरीबी है तो मतलब बहुत सारे 10 सवाल छूट रहे हैं ना, गरीबी है, करो अटेम्प्ट, अकड़ बकड़ जगह कर दो यार. 25% है, कितना ही रैंडम होगा, कितना ही गलत कर लोगे. नहीं गलत कर दोगे. True, very true actually. So basically you had like 54 days, you chalked out a plan in those 54 days after clearing your mindset कि भाई हाँ मैं कर सकती हूँ. It's not Very like important. Like very important. the only thing That that changed was a milestone in it. mindset. That mindset immediately changed. Proper plan बनाया. ऋषभ की वीडियो देखी तो वो ये पता चल गया आखिरी 10 दिन में क्या करना है. And reflects helped you in solving the PYQs at one. And frankly मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है that you have solved reflects properly because since you have solved 10 years papers, तुमको खुद पता चल रहा है कि अच्छा एम्स ने भी अपना पैटर्न कैसे धीरे धीरे चेंज किया है. वही सेम चीजों को उन लोगों ने कभी इमेज बेस्ड किया, उनको लॉन्ग स्टेम किया और अभी क्लिनिकल करके पूछ रहे हैं ऑल दैट. एंड आई थिंक दिस इज वेरी important. A lot of people tend to think of, I actually want to say this out loud, a lot of people are like कि सर PYQ से पेपर नहीं आया. like तुमने PYQs ढंग से नहीं किए. आया सवाल अभी भी सेम ही है जो उन्होंने 10 साल पहले पूछा था, अभी भी पूछा है. अभी भी वही पूछ रहे हैं. तुमने PYQ ढंग से नहीं किए. You were expecting things in a platter कि वो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम तरीके से आ जाए. एग्जाम में वो नहीं होता. तुमने the importance of PYQs to understand examiner तुमसे पूछना क्या चाहता है. Asking that question. अगर उसने 10 साल पहले स्पॉन्जिलाइटिस पे कोई क्वेश्चन पूछा था तो you should understand the psyche कि वो स्पॉन्जिलाइटिस के ऊपर क्यों पर पूछना चाहता है. आज वो उसको कल वो उसको इमेज बेस करके पूछ लेगा स्पॉन्जिलाइटिस को. उसके बाद वो किसी की डायरिया की स्टोरी सुना के पूछ लेगा. अगली बार वो स्पॉन्जिलाइटिस की ट्रीटमेंट पूछ लेगा. उसके बाद तुम ये कहोगे कि सर वो 2012 वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो
नहीं भाई, तू बेवकूफ है, मेरी मेरी और तो Exactly. उसने तो सेम क्वेश्चन ही अभी भी पूछा है तेरे से. Exactly, I asked you exactly the same question. You are not able Hmm. to pick it. And you Hmm. actually, since I could understand that you actually, since you probably because you were not thinking about the result, a lot of people become very result focused towards the end. You enjoyed the process of MCQ solving, and that's why you were able to understand and grasp also कि अच्छा अभी पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया. ओ मैं यहाँ पे Hmm. मिस्टेक्स कर रही हूँ, ये आरएनए में मेरे बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं. And obviously that's why you were able to capitalize on your mistakes also, and improve upon your mistakes. Hmm. And Hmm. very important thing I want to tell all aspirants who are watching this interview कि it's okay to make mistakes, and it's especially good that you make mistakes before the exam. Uh, the बेवकूफी and the blunder is if you make the same mistakes in the exam. मतलब वो नहीं होना चाहिए. नहीं होना Like चाहिए. ये Exactly. पढ़ लिया ना, इसमें से गलत नहीं होगा. तुमने एक बार गलती कर दी तो ठीक है, फिर से कर दो गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एग्जाम में वो गलती मत करो. हाँ, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. वो उससे ज्यादा गिल्ट क्या हो सकता है कि मतलब तुमने पढ़ा और फिर तुमने जाके गलत कर दिया वहां पे. गलत कर दिया. मतलब एग्जैक्टली. कितना पेनफुल गलत गिल्ट. बाद भी तुमने जाके वहां पे वो नहीं किया एवरीथिंग. सो obviously thank you for like the praise that you gave to like praise, या जो भी एटलीस्ट यू यूज रिफ्लेक्स, आई थिंक 10 साल के प्लस करी है, नो अभी डाउट. है. Like reflex actually played a huge role. It became a tool. Like ऐसा था कि if this is my pattern, no, like this is like a DNA. Okay, so that my study is DNA and reflex is there forming bonds. Like it makes sense now. Like everything has come into place because वो जो दिमाग के साथ information के साथ Tetris खेलना था ना, तो वो जरूरी था कि reflex helps in that. Like helps integrate that knowledge because you don't have so many questions in one place accessible to you in various formats. There's not just one format कि आपके पास multiple subjects, subject wise, topic wise questions है. You also have 10 years of separate question paper, 200 का set of 10 years, 20 papers. ठीक है, that is available. And if you're not satisfied with that, you can make a custom module of however many questions you want. You have multiple formats of the same thing available over and over again. You can practice. And I came across Mohsin sir का एक video. मल्टीपल रीसेट्स भी हैं जस्ट टू कंप्लीट इट. मल्टीपल आई एम वेरी हैप्पी विद द मल्टीपल रिसर्च, लाइक रियली हैप्पी कि मतलब मैं तो चाहती बुक मार्क भी गायब हो जाए किसी पॉइंट पे. मैं तो ये भी चाहती थी बुक मार्क रह जाते हैं मैं तो. बाकी सब ठीक है. बुक मार्क से एक्चुअली बस एक चीज पे ध्यान रहती है कि पिछली बार जब सॉल्व किया था तो ये शायद मैंने गलत किया था इसलिए बुक मार्क किया हुआ है. और वो ट्रिक है सोच के कि क्यों गलत किया था समझ में नहीं आ रहा, बट देन आई रिमूव दैट एज बुक मार्क. तो ठीक है, लाइक व्हेन आई एम रीसेटिंग नो बैगेज आई स्टार्ट अगेन. एंड तब जब अच्छा हो रहा होता है मेरे को पता है ये एक पॉइंट पे आकर के ना ऐसा होता है कि तुमको याद हो जाता है वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इतना सिमिलर है इसके अंदर ना. चार ऑप्शन देखे ना तुमको पता है कि आंसर ये वाला सही है. सवाल भले ही तुमने अभी पढ़ा भी नहीं है, तुमको पता है यही आंसर है. मैंने कई बार रिफ्लेक्स में किया है बिकॉज एक्चुअली एग्जाम में ये स्टंट नहीं मार सकते, तो रिफ्लेक्स में मजा आता है करने में. लाइक ठीक है, ये मैंने बस मार्क कर दिया. आई थिंक कहीं भी मेलानोमा वाला क्वेश्चन है घूम घूम के आया है, तो मैंने ऐसे मार्क किया मेलानोमा नहीं अकाउस्टिक शॉनोमा शॉनोमाज आते हैं घूम घूम के. हाँ, ये आते हैं उनको घूम पसंद घूम के आते है हैं हर तरीके से आते हैं. होता है, दे लव दैट. चार ऑप्शन है ठीक है, चार ऑप्शन है, एक शोनोमा है. मैं पहले शोनोमा मार्क कर दूंगी फिर मैं सवाल पढ़ूंगी जस्ट टू सी कि मेरे को रटाई कि नहीं. मेरे को रट गया है, मेरे को फॉर्मेट रट गया है. But this is might seem fun right now, but this reflects something about INI-CET कि वो एक ही चीज को बार बार पूछ रहे होते हैं, जस्ट थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट में. हाँ हाँ, आई नो आई नो. तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा. एंड मोर हम्म. इम्पोर्टेंटली, बट अगर तुम उनको सिर्फ रट के चले जाओगे, उसके उसके पीछे के उसको नहीं समझोगे कि एग्जामिनर वो पूछ क्यों रहा है, तो भी गलती करके आओ. मतलब Exactly. So when things started making sense, I started doing better. Like all I needed was to understand why that question is coming in. Like I don't need to know कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसको क्या सही लगता है, उसको क्या सही नहीं लगता, पूछ क्यों रहा है वो. दैट आई नीड टू नो. क्यों बार बार वो घूम घूम के ऑब्सेशन पूछ रहा है. Why do you want to know position of thought है, क्यों जानना चाहते हो. Like this is a big controversy. Okay, I have my coaching क्वेश्चन है teacher, I यार. discussed this. कंटेंट. उन्होंने like किताब निकाल के मेरे को I have दिखाया. for this particular question, I have given an audio explanation as well. I know आपने ग्रुप को भी डांटा सकते. हाँ, Why do this? actually have given, क्योंकि this is a controversial question, I'll explain it right here. हाँ हाँ. Obsession is possession of thought, it's not content of thought. देखो, content of thought का मतलब है, अगर what is the most common obsession कि हाथ गंदे हैं या हमने अपना दरवाजा ठीक लॉक लॉक किया. नहीं लगाया ढंग से. हाँ, देखो ये बताओ, ये क्या गलत यही है? दोनों हिस्ट्री भी आती है. नॉर्मल नॉर्मल बंदा भी सोचता है ना ये. Like you हाँ also हाँ. think when you're going outside that have I locked or not. You may think हम्म. one time have I washed my hands properly or not. एक बार सोचोगे. Obsession में वो हम्म. 100 बार हो जाती है. Your mind is possessed by that thought.
कंटेंट में Understandable. प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है उसमें. I'll add something to it, like a totally different perspective, because I'm a non-names person. ठीक है, I have cracked names. तो मेरे को एक चीज बस रियलाइज हुई कि मतलब आई हैव टॉक टू माय कोचिंग प्रोफेसर आल्सो, एंड जेन्युइनली दैट गाय शोड मी किताब में से निकाल के एंड ऑफ कंट्रोवर्सी कंटेंट ऑफ थॉट, बट मैंने कहा एम्स बोलता है पोजीशन ऑफ थॉट. सो इन केसेस ऑफ कंट्रोवर्सी, नो, आई इफ आई कैन ट्रस्ट वन रिसोर्स, दैट इज योर रिसोर्स, योर ऐप, बिकॉज यू हैव आंसर्ड इट. You are one person who has done UG, PG, super specialty from AIMS. You don't know anything beyond AIMS. कल को अगर लेडी हार्डिंग अपना रखता है ना एंट्रेंस एग्जाम, आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू सही आंसर क्या है. तो अगर आपके ऐप में आपने अपने प्रोफेसर से पूछा, आपका प्रोफेसर बोलता है कि सूरज पश्चिम से उगता है, वो जो कोड होएगा ना एग्जाम के अंदर, उसमें करेक्ट आंसर वही कोड होएगा. तो सूरज पश्चिम से उगता है फॉर एग्जाम पर्पसेस उगता है. Another controversy is last symptom in compartment syndrome. Pulselessness and paralysis. Controversy है. Paralysis in a lot of places. For need purposes, paralysis. For aims purposes, pulselessness. क्योंकि aims का प्रोफेसर एम्स नहीं है, पैरालिसिस है. मैं लड़ लूंगी, लेकिन अभी फॉर एम्स प्रोफेसर पल्सलेस है, मैं वही क्योंकि कहता हूँ, एम्स पर्पस है, एम्स के प्रोफेसर को लगता है. एम्स के हाँ बस पर्पस के लिए एम्स वो बोल रहे हैं. पल्स है. हाँ वो पल्स है. एम्स का प्रोफेसर बोल रहा है कि पल्स है तो है. एम्स का प्रोफेसर बोलता है सूरज पश्चिम से उगता है, उगता है. So I took two resources which were exclusively AIMS. Like one was Reflex. You made it. You don't know anything beyond AIMS. I'm so sorry if it sounds offensive to you. You don't know anything beyond AIMS, and I trust that. Like if it comes to AIMS, I know कि this person, whatever this person is saying, क्योंकि कल को मेरे को पता है कि मेरे प्रोफेसर ने स्पेसिफिक चीजें लेक्चर्स में बोली है. अगर हार्डिंग अपना इंटरेस्ट रखता है ना, मेरे को पता है सही आंसर क्या है. भले ही कंटेंट कुछ और बोल रहा है, भले ही टेक्स्ट कुछ और बोल रहा है, मॉडर्न टेक्स्ट कुछ भी और बोल रहा है, मेरा प्रोफेसर का ईगो अगर है ना कि वही सही आंसर है, तो वही सही आंसर है. तो वो चीज है, यू हैव रेड फ्रॉम दोस प्रोफेसर्स एंड यू हैव टॉक टू दोस प्रोफेसर्स, एंड फॉर द पर्पस ऑफ ऐप मे बी यू हैव डिस्कस्ड विद दोस प्रोफेसर्स कि क्या आंसर है, वो कंट्रोवर्सी कैसे सॉल्व करनी है. तो आई नो कि उस प्रोफेसर को ठीक लगता है, तो मैं आंसर वही करके आऊंगी. वन थिंग, another resource that I use was Zenabora in a lot of places, simply because she is also UG, PG, AIMS, doesn't know anything beyond AIMS. तो ये बंदी जो बोलेगी वो AIMS है. तो फॉर AIMS purposes, two people who are exclusively AIMS, जिनको नहीं पता बाहर क्या है, This भले वो is, कोशिश कर रहे हैं, but but this is one thing I'm being very specific about, and I'm so sorry. I mean, no offense, like this out of is respect. true also. Like I remember कि I attended Dr. Tamim's lectures, medicine वाले होते हैं ना. तो he Hmm. said कि अगर तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस या इन चिल्ड्रन, तो आंसर है नॉक्सनॉरिन पपूरा होगा. AIMS पूछेगा तो कावासाकी है शायद, आई हाँ, थिंक. अगर पीजीआई पूछेगा तो आंसर कावासाकी होगा. हाँ वो याद हो गया, वो पैटर्न पैटर्न याद हो गया, डिफरेंट पैटर्न याद हो गए, I've ऑप्शन seen, याद हो गए. क्योंकि इसको ये ऑप्शन सही लगता है, वो भी याद हो it गए. almost guess it right now. Exactly. तो ये चीज उन्होंने भी बताई थी, because things tend to change according to the, मतलब हम्म. यार एग्जामिनर को जो पसंद है पसंद है. हाँ, इट्स नॉट एक्चुअली समथिंग यू एग्जामिनर शुड बी छोड़ेगा, अपफ्रंट. हाँ, एग्जामिनर नारो प्रेप लैटर देख रहा है, उसने सही आंसर क्या दिया है. fair enough. मतलब as students also ना, we should realize at some point of time, like we are students of medicine, ठीक है, there is no wrong answer in medicine, ठीक है. if you say heart राइट साइड में होता है ना, होता है जब साइटस इन्वर्सस होते हैं, हार्ट राइट साइड में होता है, सही आंसर है. बट यू हैव सम आंसर मोर करेक्ट देन अदर्स, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ Perspective of the वेयर यू आर अप्रोचिंग. person who's setting the paper actually. Exactly. So that thing you need to know. And I had to rely on one source, and I'm glad I relied on one source which knew exclusively AIMS. तो मैं तो नीट वाला पार्ट सॉल्व भी नहीं किया रिफ्लेक्स का, मैं बस नीट देख के ऐसे ही मुड़ जाती हूँ कि नहीं देखना, देखना ही नहीं, सवाल भी नहीं देखना कि मतलब कुछ होगा उसमें करेक्ट करेगा, यहाँ पे इतना ही डालो जितना प्रोसेस कर सकते हो. 100 मिलियन न्यूरॉन्स बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है हमारे पास एज ह्यूमन बीइंग्स, बट पुट इन द राइट थिंग्स. तो that was one thing, like I wanted people to know this part, like why reflex is important, especially from INICT point of view. I did not use it for NEET, I don't know how to use for NEET, but I know INICT. I have known INICT's pattern for the last, I think, 3-4 years since I have been chasing this exam, and I have been chasing this exam since UG. ये एक दिमाग में था यही जाना है. आई डोंट केयर कि तुम बोलते हो सर्जरी के लिए अच्छा है बुरा है, मेरे को यही जाना है, बिकॉज दिस इज वन इंस्टीट्यूट विच कैन लिटरली afford to answer my questions. I did an ICMR project in UG, and I had to change my topic 3-4 times simply because we did not have enough resources. And I felt like यहाँ नहीं आना मेरे को बार वापस. And I am from a topmost college in the country. I'm not from any other college. मैंने देखा limitation, and मैंने कहा कि नहीं. Like in AIMS, it is said that if you can name a test, you can do it there. मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये गोल्ड माइन चाहिए. तो आई डिसाइडेड कि यहाँ तो आने नहीं, मैं सर्जरी करूंगी, लेकिन मेरे को गोल्ड माइन चाहिए कि जहाँ मेरे को एक्सेसिबल है रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट विच कैन एक्चुअली आंसर माई क्वेश्चन, बिकॉज आई लर्न फॉर द जॉय ऑफ रीडिंग. I am not somebody who is success oriented. I am oriented towards information, knowledge. If it fascinates me,
I'll go there. तो मेरा अप्रोच बहुत ही अलग था. तो आई थिंक एम्स को एम्स के पैटर्न को समझने में मेरे को ज्यादा टाइम लगा नहीं था. आई जस्ट गॉट स्वेड बिकॉज सही डायरेक्शन नहीं मिला इन मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ. But I'm glad I reached here. And I'm glad that right resources showed up at right point of time. Your app showed up at right point of time. Zainab ma'am showed up at right point of time. One of my friends who cracked AIMS showed up at right point of time. He had rank of 159, Harsh. He's a very good friend of mine. Like हम रेजिडेंसी के टाइम पे मिले थे. I think लड़ाई हुई थी फिर हम दोस्त बन गए थे. तो like he said तेरे को जो रिसोर्स चाहिए ना तू ले तू बस पढ़. When I told him कि मेरे को बस एक लास्ट शॉट इधर देना है simply because of the joy of reading. मेरे को जो रिसोर्स चाहिए मैं दूंगा. So he gave me an academy access. He gave me everything. Like अपना सारा जो भी था. मैं रात को 2 बजे उसको देखूंगी भाई ओटीपी दे दे. He's giving me OTP रात को 2 बजे भी. So like things like that. So like that help happened. Like I just got lucky in terms of things that showed up in my life, and that had a role to play in how I did in the next few days. So that was my approach. And I also came across I got really, really lucky, damn. I look back, I see it that way. Like, if मैं इतना cluelessly scroll कर रही हूँ. Stop it right there. Luck favors the prepared mind. Those Pasha ने कहा था. So I'm sure you must have been lucky. But at the same point of time, I really want to say that कि नहीं, you had worked hard यार. Last year से अब तक तूने मेहनत की थी. And that's why you were able to recognize कि चलो हो सकता है कि ये रिसोर्स करूंगी तो मेरे को फायदा मिलेगा. तो chance favors the prepared mind. And you had worked hard. Understandable. You yourself said that you got distinction in biochemistry in your first year. इसका मतलब तूने भी एमबीबीएस में मेहनत की थी. You're not someone जिसने वो बहुत स्पेसिफिक करी थी क्योंकि कहीं कहीं पे आई टेल यू एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी की वाइवा में माय प्रोफेसर सेड ये क्या मॉडल है. आई सेड आई डोंट नो. लेबल किया हुआ था. शी इज लाइक पढ़ के बता क्या मॉडल है. आई सेड आई डोंट नो. शी सेड गेट आउट. दैट वाज माय एम्ब्रियोलॉजी वाइवा. मैं वो भी थी. फर्स्ट ईयर की बात है. वन पर्सन हु इज गुड इन बायोकेमिस्ट्री डाउनहिल एनाटॉमी. आई जस्ट पास्ड. They came on extreme. Yeah, so that's a funny story. But yeah, so the thing is that you had worked hard for it, and ठीक है, it's human to attribute things to luck. And I'm not saying that luck does not play a role. I'm not saying that. Like I'm not a motivation oriented person. I told you. It's like the harder I work, the luckier I get. Luckier I get. That kind of thing. That kind of thing. Exactly. And you know that. It's just that वो सारा luck एक साथ ही 50 दिन में आ गया शायद. अब तक नहीं आया था. And no, I started looking for things maybe that's why I see. And because आपके videos पहले भी थे. ऋषभ सर की videos जो release हुई हैं, that was there when I was giving November exam also. I didn't see them because my brain didn't see them. It didn't want to. Now it wanted to, and I saw. And one more lucky thing, like I'll just say a random event in timeline happened that I came across Mohsin sir's video. You know Dr. Mohsin, he is in cardiology, right? तो उनका एक वीडियो था 10 मिनट्स होता है तो मैं देख लेती हूँ. लाइक अगर मेरे को लगता है कि ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहा, टू द पॉइंट है, 10 मिनट्स में देख लूंगी. 2x के 5 मिनट्स लगेंगे, गुड इनफ फॉर अ ब्रेक. तो मैंने देखा वीडियो एंड ही सेड कि 10 साल का पेपर निकालो, 20 पेपर बनते हैं तुम्हारे पास. 20 days बिफोर एग्जाम सिट डाउन, 9 to 12 गिव 1 पेपर एवरी डे. मैंने कहा ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है. एक तो मेरे को जीटी प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग प्रीवियस ईयर्स. मेरा प्रीवियस ईयर भी हो रहा है, मेरा 9 से 12 के बीच में बैठ करके एक टेस्ट भी हो रहा है. एंड आई एम डूइंग द प्रीवियस ईयर अगेन जब मैं उसी दिन बैठ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैव टू डू माइक्रोबायोलॉजी, राइट. तो पहले तो मैं 9 से 12 सुबह उठी हूँ, चाहे मैं 8:50 को उठी हूँ, कॉफी पी, सबसे पहला काम किया पेपर देना है. 3 things आई टोल्ड माई सेल्फ. भाई रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ट्रेन करना है, 20 दिन लगते हैं ट्रेन करने में. तो आई एम टेलिंग माई सेल्फ I'll take every question on its own merit. I'll read for the joy of reading. And I'm going to have fun. Like I'm going to be happy, whatever makes me happy. And then I'm sitting there, I'm giving my exam. एग्जाम खत्म हुआ, जो भी आया रिजल्ट आया 122 आया था जब मैंने पहला सेट सॉल्व किया रिफ्लेक्स में, उल्टे सीरीज में सॉल्व किया, लाइक द अर्लीस्ट पेपर फर्स्ट एंड द लेटेस्ट पेपर इन द एंड. तो ठीक है, व्हेन आई वाज डूइंग दैट तो 122 करेक्ट हुए हैं. जो सबसे पुराना पेपर आपने 2011-12 का शायद डाला है, कुछ है 2011 का है शायद, 2011 का है. हाँ, जो भी पेपर है 122 सही हुए थे. तो मैंने कहा कि यही उसी रेंज में मैं चल रही थी नवंबर से. मैंने कहा ठीक है पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे. तो एक तो प्रीवियस ईयर हो रहा है एंड देन माइक्रोबायोलॉजी करनी है आज मेरे को. तो आई रीसेट माइक्रोबायोलॉजी एंड आई अटेम्प्ट अगेन माइक्रोबायोलॉजी. तो जब 600 सवाल दिखते हैं ना, डर लगता है. बट वो 600 सवाल में ना नीट के सवाल भी है और आईएनआईसीटी के सवाल भी है और 10 साल के सवाल है और बहुत सारे सवाल रिपीट होंगे. तो करोगे ना बहुत फास्ट खत्म होता है. लाइक जितना हम अज्यूम करते हैं उससे ज्यादा फास्ट खत्म होता है, लाइक 2 घंटा मैक्सिमम.
उससे ज्यादा नहीं जाता। And कोई ट्रांजिशन नहीं है आपके बीच, और मैरो के जैसा कोई टिकर नहीं है जो सेम चल रहा होता है, चाहे वो तुम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारा सोचने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो वन लाइन है, सेम टाइम है। और तुम सोचोगे उससे पहले वो तुमको आंसर बता देगा। ये थोड़ी जानना है तुमको, ये थोड़ी फिक्स करना है। 180 सवाल है तुम्हारे पास, लाइक 180 मिनट है तुम्हारे पास 200 सवाल के लिए। वो 200 सवाल तुम कहीं भी कितने भी टाइम में खत्म करो, डजेंट मैटर, 180 में खत्म करना चाहिए बस। तो एक तो वो बेनिफिशियल भी था, तो मैं प्रीवियस ईयर भी दे रही हूँ, एंड मैं दोबारा भी सॉल्व कर रही हूँ। लाइक आई एम सॉल्विंग 2 टाइम्स प्रीवियस ईयर्स एवरी सिंगल डे फॉर 20 डेज। द रीजन मेरे को सारे ऑप्शंस आंसर सब कुछ क्वेश्चन के साथ रट गया है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। मैं बहुत बार कर लिया, ये सब कुछ कर लिया ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। एंड आई वेंट फ्रॉम एंड आई वेंट फ्रॉम 122 ऑन T-21 days। एक दिन मैंने लास्ट का फ्री छोड़ा था कि बफर है, वो कुछ छूट जाएगा तो पढ़ूंगी। तो T-21 days 122 क्वेश्चन करेक्ट। T-2 days, okay, T-2 days 167 करेक्ट। आई न्यू आई वाज डूइंग समथिंग राइट। इवन इफ माय नेक्स्ट डे वाज एनाटॉमी, एनाटॉमी में मेरा जीवन बर्बाद है मुझे पता है। माय नोट टू सेल्फ इन एनाट एंड फार्मा वाज रीड इट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन, एंड मैं तभी नहीं पढ़ी थी। तो एनाटॉमी पता है कि खराब है। जिस दिन एनाटॉमी पढ़ा ना, मोटिवेशन एकदम डाउन है कि मैं बर्बाद हूँ, मेरा जीवन बर्बाद है, मेरे से नहीं होगा, आई डोंट हैव इट इन मी। नेक्स्ट डे आई एम सिटिंग डाउन फॉर एग्जाम, और अब तक मेरा दिमाग एक्टिवेट हो चुका है कि फन करना है यहाँ पेपर के अंदर, टेक एवरी क्वेश्चन ऑन ऑन मेरिट। 153 करेक्ट हो। तो मैंने कहा वट एवर आई एम डूइंग राइट, स्टिक टू इट। आई डोंट केयर कि मेरे को अब कौन बंदा आकर के क्या स्ट्रेटेजी दे रहा है, इफ आई टॉप माई स्ट्रेटेजी विल बिकम द स्टैंडर्ड। तो अलग लेवल फन चला है, गैम्बलिंग लिटरली। क्या फर्क पड़ रहा है स्ट्रैटेजी से? मेरी रैंक आएगी, मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है भाई। That's very true. Winners write history. There is no अभी doubt. बन रही है ना स्ट्रेटेजी, देखेंगे ना लोग, करेंगे ना फॉलो। बस हो गया। तो आई एम लाइक ठीक है, आई एम इफ इट वर्क्स ना, दैट इज वन मोटो, लाइक दैट इज वन थिंग आई वांट टू टेल एवरीबॉडी। ठीक है, तुम अपना इंडिविजुअल हो, you can't follow anybody. The major mistake I did was I was following toppers. I was following what people are saying, what any topper is telling me, what Rishabh sir is telling me, what you are telling me. And I titrated it according to what my weakness was. Rishabh sir ने बोला 10 days strategy. My strategy wasn't 10 days. I'll show you my थोड़ा सा filter करके उसमें कुछ personal issue details नहीं है, वो हटा करके I'll send for public view my own schedule of last 2 months, and I'll show you that my strategy has been 16 day 14 day strategy, 14 to 16 day strategy. It hasn't been a 10 day strategy, because I know कि मेरी capability नहीं है 10 दिन के अंदर 19 सब्जेक्ट shrink करने की, बट मेरी capability है कंफर्टेबली 14 दिन के अंदर shrink करने की। जब मेरा 50 दिन का शेड्यूल बना है, 14 दिन का बफर है, वो बफर जो है वो मेरे 19 सब्जेक्ट को shrink कर रहा है। नॉट वन सब्जेक्ट डे, लिटिल मोर देन वन सब्जेक्ट डे ऑन एन एवरेज। तो मैं उसको टाइट्रेट किया, अपना वीकनेस है ना उसको टाइट्रेट किया। तो यू आर योर ओन पर्सन, एंड वट एवर यू आर डूइंग, अगर तुम्हारे स्कोर्स इंप्रूव कर रहे हैं ना, डोंट लिसन टू एनीबडी, ब्लॉक एवरीबडी ऑफ, एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। जब टॉप करोगे ना, जो कर रहे हो ना वो स्ट्रैटेजी बन जाएगी दूसरे के लिए। जस्ट गो फॉर इट। लाइक मेरे को नहीं पता तुमको क्या बनना है लाइफ में, वो मिसाल बनो, खत्म करो। ठीक है? तो दैट वाज वन थिंग। तो जब 153 करेक्ट हुआ ना, लाइक ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो लाइक एक दिन पहले 140 करेक्ट हो रहा है, अगले दिन 150 करेक्ट हो रहा है। आई शो यू, मेरे पास नोशन में ना पिछले 2 साल का, जब से फाइनल ईयर से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था, बीच बीच में थोड़े से गैप्स है, बट पिछले 2 साल का ना हर पेपर जो मैंने दिया ना उसका रिकॉर्ड है। यू विल सी लास्ट ईयर आई वाज एट 90 करेक्ट। ठीक है, 90, 110 गलत हो रहे थे 200 में से। आई वाज एट 30 करेक्ट यहाँ पे। और जब लास्ट पेपर दिया था 167 करेक्ट थे। लाइक कितना भी टफ किया, कुछ भी गया, आई वाज गोइंग ऑन राइट ट्रैक। तो मेरे को पता है कि दीज आर रिपीट पेपर्स ऑफ एम्स, आई एम नॉट गिविंग अ रैंडम जीटी जहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ मेरा टीचर सोच करके दे रहा है, नहीं। दिस इज एक्चुअल एम्स पेपर, राइट? एक्चुअल एम्स पेपर आई हैव गॉन फ्रॉम 122 टू 167, एंड आई नो कि एक एक्चुअल एम्स पेपर परसों आने वाला है। तो आई एम कंफर्टेबल, 160 तो सही है। और ऋषभ सर ने कहा था अपने वीडियो में 160 सही कर लो, बाकी भगवान भरोसे। मैंने कहा कि ये तो हो गया। अब आई विल ट्राई लास्ट वन डे में कि थोड़ा सा टेट्रीज खेलेंगे, सब फिट करेंगे यहाँ पे जो वोलेटाइल है, और आई विल ट्राई हिटिंग 180। आई विल टेक एवरी क्वेश्चन ऑन इट्स ओन मेरिट, बट आई विल टेक इट अ लिटिल मोर सीरियसली। आई विल ट्राई हिटिंग 180 जहां तक पहुंच पाऊंगी पहुंच। आई डिड। जब पेपर सबमिट किया ना, मेरी एक जूनियर आई, सेम सेंटर में बैठी थी, बगल में बैठी थी। तो आई, कैसे गया वो पेपर आपका? मैंने कहा आई नो मेरे 160 प्लस करेक्ट है, बाकी जहां भी जाता है वो मेरे को नहीं पता। लाइक आई हैव दिस ओन रियलाइजेशन आफ्टर गिविंग पेपर कि मैं बिजनेस से पेपर दे रही हूँ, मेरे को पता है मेरा पेपर कैसे जा रहा है, और मुझे पता है मैं कहाँ पहुंच रही हूँ। तो आई हैव अटेम्प्टेड 197, 164 आई हैव गॉटन करेक्ट फ्रॉम द रिकॉल थिंग दैट आई नो।
तो यही उसी रेंज में था जिस रेंज में मैं अटकी हुई थी, 160 पे अटकी हुई थी, तो मैं वहीं अटकी हुई। तो ठीक है, इट्स गुड इनफ फॉर एम्स, 160 इज गुड इनफ। मैंने कहा ठीक है, फेयर इनफ। अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, आई एम हैप्पी। मैं जाके बहुत चिल कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। दिस इज व्हाट माय एंटायर अप्रोच हैज बीन। कि मैंने, मेरी मेरी फ्रेंड अभी सो रही है मेरे बगल में, बैठे सो गई है तो मैं काफी देर से बड़बड़ा रही हूँ, शी इज ignoring me. Anyway, so she cracked AIMS नवंबर में, and she was ranked 300 or 400, and then she took a branch. तो ऐसे जब मेरा ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा था, she reached out to me, क्योंकि मैं सब जगह से गायब हो गई थी, I was not talking to anybody. कुछ भी ट्रिगर कर रहा था मेरे को उस पॉइंट पे, कोई मुझे पूछता भी ना how are you, वो भी ट्रिगर करता। तो she just asked me कि कैसे अप्रोच करनी है, मेरे को नहीं पता। तो उसने मेरे को बोला है कि बस करते जा, लाइक इफ यू आर डूइंग इट राइट तो सही कर रही है। मैंने ऐसे ऐसे किया था, तू भी कर। मेरा 88 परसेंटाइल था पेपर के जस्ट एक दिन पहले, स्क्रीनशॉट भेजा मैरो का। बोलती कि 88 परसेंटाइल था, मेरी रैंक आई है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, आई डू। तो लाइक वो बिलीव इन सेल्फ ना, एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव पीपल हु बिलीव इन यू, हु टेल यू कि हाँ तेरे अंदर है कुछ। तो मैंने उसको बोला था कि यार हार्ड वर्किंग तो नहीं हूँ इतना ज्यादा, आई जस्ट होप स्ट्रेटेजी वर्क कर जाए। And like, a lot of places I have not read things, ठीक है। जैसे जो वो है ना फर्स्ट एड, फर्स्ट एड तो मैंने बहुत पढ़ी है, क्योंकि बचपन में नहीं पढ़ाई करी तो इवेंचुअली फर्स्ट एड उठाई। तो फिर मैंने जो फर्स्ट एड है ना, बायोकेमिस्ट्री का जो मेटाबॉलिज्म वाला सेक्शन है, द फर्स्ट पेज दैट यू हैव इज इंटीग्रेटेड एंटायरिटी ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज की, ग्लूकोज का सारा यूनिवर्स उस एक पेज के अंदर है, ठीक है। उसके बाहर सवाल नहीं आता है, वो मेरे को पता है। लेकिन मेरा एक अनकंफर्टेबल जोन है, ग्लाइकोलाइसिस। ना नाइन्थ क्लास में नहीं आता था, नहीं अटेम्प्ट किया था, 90% से ऊपर आए थे, ठीक है। यूजी में नहीं किया था, 2 सवाल आए थे, नहीं अटेम्प्ट किया था, लेडी हार्डिंग मिल गया। पीजी में भी आया था। मैंने कहा कि मेरे को ग्लाइकोजन फोड़ना आता है, मेरे को ग्लूकोनियोजेनेसिस में भेजना आता है, मेरे को इसमें से निकालना आता है, मेरे को टीसीए में घुसाना आता है, मेरे को उसमें से भी निकालना आता है, मेरे को उसमें से भी वापस भेजना आता है। मेरे को बस ये मेन पाथवे नहीं आता, ठीक है। वो आ भी नहीं पा रहा है। वो अभी की प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 साल की प्रॉब्लम है, 10 साल से नहीं आ पा रहे हैं। आई एम डिस्टिंक्शन इन बायोकेमिस्ट्री, मेरे को ग्लाइकोलिसिस नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं मैं। तो जो फैसिनेटिंग है वो याद कर लिया, जो नहीं आता एक्स्ट्रापोलेट करूंगी। लाइक कहीं तक तो पहुंचूंगी ना, 4 ऑप्शन होंगे ना, तो 2 ग्लाइकोजन के होंगे, 2 ग्लूकोज के होंगे, 50% में मार्क करूंगी। कुछ नहीं, मैं कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी। इफ समबडी इज टेलिंग मी ना फोस्फिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, तो मेरे को पता है कि पीईपी और पाइरुवेट के बीच में कुछ हो रहा है। बट आई नो फ्रॉम मेमोरी कि काइनेज जो है वो ऐसे जा रहा है, और कार्बोक्सी काइनेज ऐसे जा रहा है। फोटोग्राफिक मेमोरी है थोड़ी सी। कार्बोक्सी काइनेज उल्टा बना रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का है, ये ग्लाइकोलिसिस का है, और मैं इससे काम चलाऊंगी। मेरे को ग्लाइकोलिसिस नहीं आता, नहीं आता, एक्सेप्ट किया नहीं आता, आई एक्सट्रापोलेट व्हाट आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट आई नो। इवन इफ इट इज अनकंफर्टेबल इट डजंट मैटर। लाइक 40 क्वेश्चन का तुम्हारे पास विंडो है ना, लाइक यही एक सवाल से तो मेरी रैंक नहीं आएगी, है ना। तो नहीं करूंगी अटेम्प्ट, क्या हो जाएगा, नहीं आता होगा ना, सर पैर नहीं आता होगा, नहीं करूंगी अटेम्प्ट, ये वाला चीज है। Glycolysis के एग्जाम्पल से मेरे को ऐसे याद आता है that I had a senior. He was post intern and he was preparing for PG, AIMS PG. And मैंने अभी भी हम्म, AIMS ज्वाइन किया था, तो बायोकेम में सबसे पहले आपको यही पढ़ाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ाते हैं, है ना। जिंदगी बर्बाद है वहां पे। तो नहीं, मतलब आफ्टर प्रोटीन whatever it is, I don't remember that. And हम्म, he comes to me and he's like, एक बार ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दे। तो हम्म, मेरे दिमाग में पहली थॉट इनफैक्ट एज अ 12th, समवन हु जस्ट क्लियर 12th, अभी भी एम्स आया है एंड अभी वो हम्म। बायोकेम पढ़ रहा है, एंड लाइक कि मतलब एक 6 साल सीनियर मुझसे ग्लाइकोलाइसिस क्यों पूछ रहा है, उसको ग्लाइकोलाइसिस इसीलिए पूछा कि वो सीनियर मेरे जैसा है। ग्लाइकोलाइसिस नहीं आता, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक लाइक दैट, ग्लाइकोलाइसिस नहीं आता, एक सॉर्ट ऑफ वो। एंड देन obviously मैंने पढ़ा दिया उनको, like, तो and then he like thank you, and then हम्म। he tells me something which I've never forgotten in my life. कहते आज याद है, एग्जाम के दिन तेरे को भी याद नहीं होगा, and that is so fucking true, like so fucking true, like उस दिन I was like मैं खुद को ऐसे कह रहा था ग्लाइकोलाइसिस नहीं आता, and एग्जाम के दिन यार ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं आ रहा था। And because Happens. this is so vast. I mean, no doubt about that. हम्म, Like you have to, मतलब इतना vast syllabus है, नहीं रहती चीजें याद, and that's why it's important that people हम्म। keep on focusing on things which are important and high yield again and एग्जैक्टली। again. मतलब तुम्हारा memory तो इतना, हाँ, तुम उसमें And it's not really necessary to retain everything. everything You हो, have to at some point accept कि तुम्हारी एक limitation है, इतनी memory है, इतना ही याद रहे, work around it. है ना, हाँ। work around it, कुछ जो भी करना है करो, बट वो हाँ। चीज़ें तो अभी इतनी याद रहती है ना, लाइक टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस से मैंने कहा चलो ये
हाँ, आपको मेमोरी याद है, ग्लाइकोलिसिस अभी भी नहीं याद हो? मेरे को ग्लाइकोलाइसिस तो याद हो गया यार अच्छा, गुड फॉर यू। ग्लूकोज ग्लूकोज phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 plus phosphate, glyceraldehyde 3 आई कांट रियली जज, मेरे को नहीं आता है। phosphate. सही होगा, Yeah. कॉन्फिडेंस से कह रहे सही है। But the reason I know this right now is because I'm now at an MDPs, तो मेरे को याद करना जरूरी हो गया ओ because हाँ, आपकी मजबूरी है। मजबूरी है तो मजबूरी है, that's why वो क्या कहते हैं वो करना पड़ रहा है मेरे को, बट देख इसमें मैं हम्म। गलतियां कर रहा हूँ, दिस इज ऑब्वियसली कोई ऐसे वो नहीं है, बट व्हाट द एंटायर थिंग दैट पीपल शुड रिमेंबर इज कि व्हाट यू इवन थिंक इज इजी ना, वो इजी नहीं रहता है, बार बार नहीं पढ़ना रहता, पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझना पड़ेगा रिटेन करने के लिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्वेश्चंस, इंटरनलाइज व्हाई, द एग्जैक्टली व्हाई पार्ट। एग्जैक्टली यू हैव टू उस इंटरनालाइज द चीज व्हाई पार्ट, ऐसे रट नहीं सकते चीजें तुम, बट तुम समझ जरूर सकते हो, हम्म। तो वही लाइक चीज। आई ऑलवेज हैव अ हैबिट, जब भी कुछ पढ़ रही होती हूँ आई कीप आस्किंग व्हाई अंटिल आई एम सेटिस्फाइड ऑफ आस्किंग व्हाई। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, एंड एट सम पॉइंट आई लाइक ठीक है, अब समझ में आया, अब ठीक है। तो इफ इवन इफ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई हैव स्टडीड विद, दे विल वाउच फॉर दिस फैक्ट कि पेपर से एक दिन पहले मैं बहुत डम सवाल पूछूंगी, एंड पेपर वाले दिन बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बिकॉज वो डम सवाल पहले पूछ लिए थे। कहीं ना कहीं एक छोटू सा एक टीनी टाइनी डिटेल होता है जो मिस कर रहे होते हैं। एंड इवन व्हेन वी आर सॉल्विंग इन ऐप ना, तो जैसे मैं प्रीवियस ईयर जब करती हूँ, तो उस टाइम पे यू रिव्यू दोस क्वेश्चंस मोर एक्टिवली, क्योंकि अभी अभी सॉल्व किया, इट्स अ वेरी डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का। तो एक मान लो मैंने कोई भी एक प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, मेरे 40 सवाल गलत हुए हैं, उस 40 में से कुछ सवाल होंगे जो गलत आंसर देकर के मेरे को लगता है कि मे बी व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट एंड ये गलत है। तो उस सिचुएशन में आई विल गो बैक टू माई नोट्स एंड आई विल सी, या तो मैं कोई डिटेल, क्योंकि मेरा पार्ट से गलत नहीं, आई हैव डन 5 years ऑफ एमबीबीएस, आई हैव ड्रॉप 1 year, आई हैव डन लिटरली एवरीथिंग आई कुड। तो इस पॉइंट पे जो मैं सोच रहा हूँ मेरा थॉट प्रोसेस गलत नहीं है, बट मे बी आई एम मिसिंग अ वेरी टीनी टाइनी डिटेल जो उसको पिस कर रही थी, एंड आई एम गोइंग टू माई नोट्स एंड आई एम रीडिंग इट, एंड इफ माई नोट्स आर सेइंग द सेम थिंग जो मुझे सही लग रहा है, देन आई विल गो टू माई टीचर एंड आई विल कंफर्म फ्रॉम देम कि क्या है। एंड आई नो कि मेरा ना नोट्स में कहीं मैंने ऑर्थोपेडिक्स में लिखा हुआ है कि मार्च फ्रैक्चर के अंदर मेटाटार्सल का जो हेड होता है वो इंजर होता है, एंड मेरे को वो याद है। एंड व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग और वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, एंड लाइक मेरे को कुछ और याद है, आई एम गोइंग टू माय नोट्स, हेड लिखा हुआ है, देन आई एम गोइंग टू माय टीचर कि मेटाटार्सल का कौन सा पार्ट इंजर होता है, आप एक बार मेरे को क्लैरिफाई करो। एंड ही इज टेलिंग नेक। तो कट किया मैंने नोट्स में, नेक लिखा, आज से नेक है इसका आंसर। दीज आर दिस अ 3 स्टेप प्रोसेस हाउ यू अप्रोच अ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब भी अगर नहीं सॉल्व हो रहा है ना, अब भी अगर तुम्हारा टीचर बोल रहा है कि ये वाला इशू है, कि मतलब जो तुम्हारा टीचर बोल रहा है तुम सही हो, बट ये ऑप्शन गलत है, गलत आ रहा है, तो आई डू वन थिंग, उसमें ना एक ट्राइंगल बना हुआ आता है सवालों के ऊपर, वैसे प्रीवियस ईयर वाले सेट में नहीं है, प्लीज ऐड दैट, जो नॉर्मल वाले सेट्स होते हैं ना उसमें है, जो ट्राइंगल बना है ना उसमें मैं लिख देती हूँ कि द करेक्ट आंसर माइट बी दिस करके। आप अगर कभी रिव्यू करवाओगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ रिव्यूज। और कभी कभी ऐसा मेरे को लगता है कि एक बार मेरे को और कंफर्म करना है, आई गो आस्क ऑन अ ग्रुप जहाँ पे ज्यादा लोग, नॉट ऑन रिफ्लेक्स ग्रुप, मेरे को बहुत बाद में पता चला था, तो आई गो टू यूजुअली जनरल मैम का ग्रुप जिसमें करीब 56,000 समथिंग पीपल, I'm like, can you make sense of this, please? Somebody teach me how to make sense of this because I can't reach to this answer. तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरे को बता देता है कि ये वाला लॉजिक लगा था। एक सवाल है जिसमें कुछ हाफ लाइफ है, वो उतना 75 mg या कुछ निकल रहा है उस ड्रग का बॉडी के अंदर से, एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि 6 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, वैसा वाला कुछ है। एंड आई कुडंट मेक सेंस क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है, समबडी करेक्टेड दैट एंड देन इट मेड सेंस टू मी। तो इस टाइप का अप्रोच होता है कि यू यूज योर पीयर्स ऑल्सो समटाइम, सम ऑफ देम नो, ऐसा है कि 50,000 लोग हैं, एक को तो आंसर आता होगा, and usually all of us medicos, no matter how much we hate each other on certain things, but we all are helpful to each other. That is an inherent property we have to help, to make people feel okay. So ठीक है, तो somebody will answer, and तब भी नहीं मिलता है तो फिर छोड़ दो, कोई नहीं, जब आएगा पेपर में तब देखेंगे, क्या ही कर सकते हो, यू डिड एवरीथिंग यू कुड, हो गया। यही थोड़ी आएगा पेपर में, आ जाएगा तो देखेंगे, कड़ पकड़ कर देखेंगे। तो लाइक दैट थिंग, लाइक यू गिव अप व्हेन यू हैव मेड द लास्ट डिच एफर्ट, तो उसमें भी गिव अप थोड़ी हो रहा है, इट्स लाइक इट्स एन एक्सेप्टेंस कि यही है, या तो रट लो, आएगा तो ये ग्रीन वाला मार्क कर देंगे क्योंकि आदित्य सर ने लिखा है एम्स में शायद वही सही होता होगा करके। ठीक है ये, तो आई आई समटाइम्स ट्रस्ट दैट पार्ट आल्सो, क्योंकि मेरे ऑर्थोपेडिक्स में फैकल्टी ने कंफर्म किया था अबाउट द पैरालिसिस पार्ट ऑफ कॉम्पार्टमेंट सिंड्रोम, बट बार बार हर एक सेट में इट वाजंट अ टाइपोग्राफिकल एरर, इट वाजंट अ कोडिंग एरर, हर सेट में पल्सलेसनेस आंसर था। तो आई एम लाइक अब अगर एम्स पूछेगा पल्सलेसनेस से, एंड ऑफ कंट्रोवर्सी फ्रॉम माय साइड।
लाइक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सेप्टेंस साइड कि आएगा तो आएगा। तो एक ये अप्रोच है कि लाइक दिस इज हाउ यू अप्रोच रॉन्ग क्वेश्चंस, दिस इज हाउ यू गो फॉरवर्ड्स इन योर थिंग्स, एंड दैट स्ट्रेंथens योर ओन approach, your own ability to view the questions next time. पल्सनेस और पैरालिसिस वाला क्वेश्चन है ना, मतलब आई विल से समथिंग आल्सो अबाउट दिस कि इन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से फ्रैंकली में रैंक नहीं बदलती। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है द प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मैं उस लिमिट तक रीच कर रही हूँ कि मेरा पीयर भी मेरे को आंसर नहीं कर रहा है ना। दोस क्वेश्चंस आर 1 in 1000। ठीक है, 1 in 1000 इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर रैंक या एग्जैक्टली, एवर। मतलब ये क्वेश्चन गलत हो भी गया या सही भी हो गया, छोड़ गया, नहीं फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ किस क्वेश्चन से फर्क पड़ेगा, अकॉस्टिक न्यूरोमा वाले से पड़ेगा, वो उसको पक्का पड़ेगा। वो है ना? गलत करोगे तो तब तो तुमसे लाइक इससे ज्यादा गिल्ट क्या होगा तुमको जीवन में कि 10 बार ही पढ़ा था वो सवाल। है ना, वो कैसे अकॉस्टिक गलत न्यूरोमा से करोगे? फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो हम्म, बार बार एम्स पूछता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नॉट अ ग्लूकोनियोजेनेटिक। नहीं है, नहीं है। ठीक वो है घुमा घुमा के भेजता है, खुद नहीं जाता है। वो है ना, एक चीज रटना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसिटाइल कोएंजाइम इज नॉट अ ग्लूकोनियोजेनेसिस सिस्टम्स, उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऑब्सेशन इज डिसऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ थॉट, उससे फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट शायद उससे भी क्योंकि ना, बार बार पूछे, बार 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 पूछने पड़ेगा पड़ेगा, अगर बार आएगा तो फर्क पड़ेगा। बार पड़ेगा। ठीक है, बट ये एक बार मतलब ठीक है, एक दो नहीं मतलब हाँ। have a broad idea of things, people get like हम्म। in वो what is that English thing ना, मतलब कि you don't lose sight of the forest because of one tree। हाँ, वो न्यू प्लेजिया वाले चैप्टर में रॉबिन्स के अंदर दिया हुआ है वो छोटा सा एक लाइन जिसका स्क्रीनशॉट लेके सेकंड ईयर के बच्चे व्हाट्सएप स्टोरी डालते हैं। मैं भी भूल गई हूँ बट आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। You don't lose sight of the forest because there's a tree in front of you or हाँ, anything। जापानीज कोटेशन है ये। हाँ, हाँ, एक मिनट। डोंट गेट सो लॉस्ट इन द वुड्स दैट यू लूज साइट ऑफ द फॉरेस्ट, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली वही वही सेम चीज है हम्म कि ब्रॉड आइडिया हो, अच्छे से प्रैक्टिस हो, एग्जाम निकल, एंड ऑब्वियसली द वन थिंग दैट यू एम्फसाइज इन द बिगनिंग, होप होनी चाहिए, मोर देन होप, मतलब हम्म। सेट होना चाहिए कि गलत, ठीक है मतलब, हाँ, लाइक लाइक वन मोर थिंग ना, मोहसिन सर का जो वो स्ट्रेटेजी था ना दैट वर्क इन फेवर ऑफ मी बिकॉज एवरी टाइम आई एम सॉल्विंग अ न्यू पेपर। लाइक 2011 का मई सॉल्व किया, अगले दिन 2011 का नवंबर सॉल्व किया, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, टॉपिक्स रिपीट होंगे, देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर एंटायरली न्यू, नहीं देखा। जब मैं 15वां 16वां पेपर सॉल्व कर रही हूँ ना, देयर आर स्टिल फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर एंटायरली न्यू। तो वो एक इंटरनली मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि कुछ सवाल आएंगे जो किसी को नहीं आता होगा, जो एंटायरली न्यू है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस, वन ऑफ द एग्जांपल्स इज लेटर रोल का हाफ लाइफ। बिना सर पैर का एक सवाल पूछेंगे वो। जैसे इस बार ही पूछा था ना, कोई एक ड्रग दिया था, मैं ड्रग का नाम ही मुझे याद नहीं, एंड देन दे गिव दोस म्यूटेशंस कि कौन सी म्यूटेशन से होता है ये। मुझे क्या पता कौन सी म्यूटेशन से, व्हाई डू आई केयर, आई डोंट केयर। यही मेरे को नहीं जानना। रट लूंगी जब आएगा तब। है ना, तो एग्जैक्टली, ये लेटर्स यही चीज है। टाइप हो गई या हाँ, दैट डिडंट गिव मी एंजाइटी आ जाएंगे। हाँ। हमारे टाइम पे भी आया था, हमारे टाइम पे कुछ हर टाइम ही आता है, हमारे टाइम पे एक टबीना फिन के ऊपर कुछ आ गया था अजीब सा। अरे नहीं, हाँ, आई थिंक आई नो दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा था शायद, नहीं नहीं, ऐसा टबीना कुछ फिन था। का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो लोगों को पता होता है। they क्या had पूछा था? asked कि something on डोंट रिमेम्बर। I think जितना मेरे को याद आ रहा है, they had asked about किस नए फंगल के एंटी फंगल ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ रही है। a lot of हाँ 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 हाँ, द आंसर वाज ग्लिसोफेल्विन नॉट ये आपके हाथ में है। हाँ, सो उसका आंसर कंट्रोवर्शियल है, मैंने ग्लिसोफेल्विन इसलिए डाला हुआ है वहां पे क्योंकि हम्म लोगों ने उसका आंसर ग्लिसोफेल्विन किया हुआ है, एंड हम्म। कहीं कहीं से मेरे को कभी कभी पता चलता है कि उसका आंसर शायद, मैंने भी पहले टर्बिनाफिन मार्क किया था, जब पहली बार ये सवाल देखा था टर्बिनाफिन मार्क किया था, जब रीसेट किया तब भी वही मार्क किया, देन बाद में याद हो गया नहीं कि तो तो मैंने कहा एम्स बोलता है तो है। हाँ, so this is a very, again, this is a very controversial question. A lot of people think its हम्म। answer is tabinafine, कई लोग कहते हैं aggressive। बट द सोल रीजन टर्बिनाफिन वेंट आउट ऑफ ट्रेंड was because of this. We are still using रीजोफर्बिन। मैं तो टर्बिनाफिन बहुत कम पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, तो it made more sense to me, टर्बिनाफिन made more sense to me, but एम्स बोलता है कि सूरज पश्चिम से उगता है तो उगता है, तो वही मार्क होएगा फिर। लाइक आई हैव कम टू दिस एक्सेप्टेंस कि वो बोलता है तो है। तो तो, जो मतलब थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अजीब से होते हैं, उनको छोड़ देना होता है, हाँ। फिर अगर उनके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हम्म। वो जिसका आंसर, अब इसका आंसर, माय पॉइंट इज ये, इस क्वेश्चन का आंसर तेरे को एक जगह पे ग्रिसिफोलिन मिल जाएगा और एक जगह पे तेरे को टर्बिनाफिन मिल जाएगा। देयर जैसे इज नो रॉन्ग आंसर इन मेडिसिन। एग्जैक्टली, अब इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, आंख बंद करनी है, सोचना है, इंकी पिंकी पोंकी करना है, और एक को चूज कर लेना है।
कि हाँ, मैं जब जब बहुत गरीबी हो रही थी लाइफ में, जब 195 से ऊपर नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे होते हैं, तब ये करना होता है। जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको मार्क करके आऊंगा, मैं सोचूंगा नहीं। इन कॉन्वर्सेशन हाँ, टाइम स्पेंड वेस्ट नहीं करना होता, कुछ एग्जैक्टली। चीज रटनी होती है, उसके बाद आगे बढ़ना होता हाँ, है एंड ना। देन देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम दैट आई केम अक्रॉस, कि जब मैं रिव्यू के लिए सवाल रखती हूँ ना, तो गोइंग बैक टू देम बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, स्पेशली इन नीट। नीट में तो खैर वो रिव्यू काउंट भी कर लेते हैं, बट स्टिल इट बिकम्स अ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो बैक एंड देन सी दोस क्वेश्चन एंड देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट राइट, लाइक satisfy yourself with your own arguments inside your head, inside your head. तो मैंने सोचा ये बैगेज मेरे को चाहिए ही नहीं, नो रिव्यूज। सामने सवाल है, या तो ये अटेम्प्ट हो रहा है या ये जा रहा है, फिर दोबारा नहीं देखा जाएगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि 10-11 सवाल छूट गए और टाइम बच जाता है। जब 10-11 सवाल छूटते टाइम बचता है, तो हम लाइक वापस जाते हैं, कोशिश करते हैं पहुंचने का कहीं ना कहीं, लाइक 195 अटेम्प्ट करना है, उसके बियॉन्ड में देखेंगे। वो पता नहीं कैसे बैठ के मैंने किसी दिन कैलकुलेट किया था ब्रेक डाउन के दौरान, कि इतना अटेम्प्ट करने से अच्छा जाता है पेपर। तो मैंने कहा ठीक है, करेंगे। तो बैठ के बस बकवास कैलकुलेशंस करी है मैंने कई बार ना। ऐसे होता है कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या है, कहाँ पहुंचने, कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना नहीं पता, आसपास का कोई फॉर्मूला पता है ना, इट इट हैज लिटरली वर्क फॉर मी। आई वाज 100% करेक्ट इन फिजिक्स इन नीट यूजी। तो मैंने ये करा है, फिजिक्स में भी करा है। एंड ये होता है कि कोई रैंडम फॉर्मूला जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, ट्रस्ट योर ब्रेन, थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, बहुत कचरा डाला हुआ है, बचपन की मेमोरीज याद है ना, जो जो पढ़ा है 5 साल में वो भी याद है, कहीं ना कहीं याद है। होता है ना कभी कभी पेपर में बैठे, वाइवा में बैठे, सवाल पूछ रहे एग्जामिनर, नहीं याद आ रहा, वाइवा रूम से बाहर आते हो याद आता है। था वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में, प्रॉब्लम नहीं थी कोई, तुम यू आर केपेबल। तो ऐसा था दिमाग के अंदर कोई ऐसे चमक रहा है फॉर्मूला, यूज किया, नहीं पहुंची, चार में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक बार फिर से करा, 3 बार करा, एवरेज ले लिया, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू मार्क कर दी। मैं ये भी किया है। लिटरली आई एम लाइक स्ट्रेटेजी, नहीं होगा हार्डवर्क, स्ट्रेटेजी, रीच वेर यू वांट टू रीच, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाद में देखी जाएगी, लाइक आई नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू फिक्स समथिंग। Even if I'm not able to retain, there's no issue. I can always open a book and read. But I should have that approach. I should have that belief in self कि नहीं भी आता होगा ना, मैं पहुंचूंगी. If I have put in an effort and if I know something about even one option, I'll reach. And that part was like that realization was something that gave me that adrenaline rush, because that is who I am. I am not somebody who solves PYQs every day, very important. I am not somebody who ratifies PYTs every day, very important. I am somebody who learns for the joy of learning. And that part is me. Like मेरे को fun आएगा, मैं solve करूंगी. And the sole reason any set pattern is comfortable for me is because of this. The complexity of questions fascinates me. In NEET, the complexity is not so much, very superficial, and I have to read a lot to cover that superficial. I don't really like that. I am somebody who asks why over and over again. I am somebody who literally loves going in depth. And like in set प्लेट में परोस के देता है इन डेप्थ क्वेश्चन। तो वो जो फैसिनेशन होता है ना, कि व्हेन यू नो द आंसर्स, लाइक इवन if तुमको नहीं पता ना कि सही आंसर क्या है, बट यू नो द आंसर्स, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग टू मी फॉर सम रीजन। इट मेक्स मी वेरी हैप्पी, इट मेक्स मी जेन्युइनली हैप्पी। सम ऑफ दोस क्वेश्चंस आई कम अक्रॉस कि ये केस था, ये ऐसे ऐसे है। आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन इन इनिशियल एग्जाम, आई डोंट नो उसका सही आंसर क्या है, मैंने बिकॉज उतना ध्यान से नहीं देखे। तो वो बंदा है जिसको मतलब बहुत गंदा फील हो रहा है लाइफ में, एंड जब उससे पूछा जाता है कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो वो बोलता है कि मेरा सर नहीं है, मैं मर गया हूँ, मैं कैसे खाऊं। And that is a fascinating question to frame. Whoever framed that, kudos to them. Like I love that question. That is my favorite question from that entire set. Beautiful. I came back and me and my roommate ना हमने MBBS लिया था because हमको fun आ रहा था. Like we are people who cleared things and then we chose this. Like I told you, na, Doctor Strange. I am Doctor Strange. Like my friends, they chose engineering. A lot of friends. And उनका sole reason था मैं Iron Man suit बनाऊंगा. And like I'll take MBBS. मैं Doctor Strange बनेगा. So we are those people who did it for fun, who had joy in that entire journey. तो मेरी रूममेट और मैं बैठ के बात कर रहे हैं आराम से, लाइक आई कॉल हर माय रूममेट, वी हैव बीन रूममेट इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, उसके बाद नहीं थे, बट स्टिल रूममेट वाला थिंग। तो आई टेक्स्टेड हर, वो बहुत ऐसे अनॉयड थी, पेपर एग्जॉशन होता है थोड़ा सा, तो अनॉयड थी, एंड शी इज बीन अ बेस्ट टॉपर, शी इज वेरी नाइस। तो मैंने उसको टेक्स्ट करा कि आई डोंट हैव अ हेड, आई एम डेड, हाउ विल आई ईट, कि आप लंच करने चलेगी, दिस इज व्हाट आई सेड, लाइक माय हेड इज गॉन, आई एम डेड, हाउ विल आई ईट। शी लाइक मार पड़ेगी तेरे को, खाने चल। And like that is what I took out of that exam. I was happy, I was at peace, and that part was important because this exam was literally the end of my journey. Even if I failed na, I would have taken a DNB in surgery, or I have taken
DNB in orthopedics, specialized in trauma. Wherever I will go, I'll do my best. That was my own thing. कि ठीक है मेरे को approach आता है. I know who I am. I know what I'm capable of. The only limitation I have is I don't have that opportunity. और मैं उस opportunity तक पहुंच नहीं पा रही हूँ. For a lot of people, these things might be easy. For me, it's not. मैं बहुत खिसक खिसक के पहुंच रही हूँ. And अब तो पहुंच भी नहीं रही हूँ, नीचे गिर रही हूँ. तो वो एक चीज थी कि जो भी मिलेगा ना लाइफ में, दैट इज माई फेट, आई विल टेक दैट. तो मैं तो उस अप्रोच के साथ गई थी. आई वाज फीलिंग एट पीस, लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड पीस विद इन माई सेल्फ, एंड आई हैड दैट एट द एंड ऑफ एग्जाम. सो व्हेन द रिजल्ट ड्रॉप बाय, 8 बजे शायद रिजल्ट आना था, और आई वॉज आउट विद फ्रेंड्स. 8 बजे मैं वेट कर रही हूँ, 7:30 तक नहीं आया रिजल्ट. तो मेरे दोस्त ने मेरे को टीटी सिखाया और फिर हम टीटी खेल रहे हैं, एंड हम बस टीटी खेल रहे हैं, हम भूल गए कि रिजल्ट आ रहा है. एंड आई थिंक 10 बजे 11 बजे याद आया कि रिजल्ट भी आना था यार. बिकॉज आई हैड लिटरली गॉन ऑफ एवरीथिंग इन द लास्ट 54 days. अगर कोई मेरे को कोई भी अपडेट करता था, मेरा था कि आई डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड माई स्टडी टेबल. मेरे को इंसान फिक्स करना आता है, उसके बियॉन्ड आई एम डन. मेरे को नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है. अनलेस कोई अर्थक्वेक मेरे सामने आ जाए ना, मेरे को नहीं पता दुनिया में क्या होने वाला है. लाइक आई वाज दैट isolated from the world because I was happy and I had made my own environment around me. तो मैं उस जोन में थी. तो हम टीटी खेले, फिर हमने रिजल्ट देखा. बिलीव नहीं हुआ, क्या क्या है ये 107 रियली. मतलब पता था कि अच्छा गया है, बट पता नहीं था कि इतना अच्छा गया है. लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग, हाँ ठीक है, 100 200 कुछ भी आएगा, आई विल टेक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, आई स्पेशलाइज इन कैंसर. लाइक आई लाइक गिविंग पीपल होप. मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीबडी डिजर्व्स होप, इट मेक्स अस like the sole reason humanity has survived through like billion years was a sheer hope that it will work out. Like a lot of times somebody created fire, sheer hope कि fire को utilize कर सकते हैं. एंड वो चीज मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगती है. आई डोंट वांट एनीबडी टू बी होपलेस. तो मेरी जो चॉइसेस भी होती है ना फील्ड्स में, तो दैट्स बेस्ड ऑन व्हाट द मोर्टालिटी इज. एंड हायर द मोर्टालिटी आई विल टेक इट. लाइक समबडी टेल्स मी 80% मोर्टालिटी, 2 in 10 survive. I have to fix one. If I am willing to believe that much in human body, I want that person to believe. भले ही end में वो मर जाए, but till the very last moment, I want that person to have hope that it's possible. I don't want anybody to die hopeless. Everybody deserves a tomorrow, and that's something I feel that way. तो मैंने कहा ठीक है, hope. Yes. So even if when my rank came by, the first few people were my close friends. I told them ऐसा ऐसा है, and then I went off grid. कोई फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं. I want my peace. I have my peace, and I'm going to maintain this. And I am still not on Instagram. I am from the dummy account of Dr. Strange that I texted you with. And उसमें मैं किसी को नहीं फॉलो करती, कोई मेरे को नहीं फॉलो करता. I think I have one follower, just one. तो वो वाला अकाउंट है बस. आई हैव नॉट गॉन ऑन इंस्टा. लोग बहुत सारा पोस्ट कर रहे हैं, एंड आई नो अ लॉट ऑफ जूनियर्स हैव पोस्टेड फॉर मी, दे आर जेन्युइनली हैप्पी. एंड वन ऑफ द जूनियर्स दे टेक्सटेड मी कि मैंने ना टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे मैनिफेस्ट किया था कि आपका पेपर अच्छा जाए. और मैंने कहा तभी पेपर ऐसा आया था क्योंकि तू टॉयलेट सीट पे बैठी हुई थी. क्योंकि 3 सवाल का जवाब उन्होंने दिया, वो 3 सवाल मुझे आते थे. 3 सवाल का नुकसान हुआ है. Anyway, so that was my entire journey. Like I'm happy. Like my senior is asking me, what do you want to do next? I'm going to make people feel fine. Wherever I'm going, I'm going to give my best because I got my self-worth back. And it's like I'm a doctor. Everybody is a doctor, 2016 batch में. So in that year, I think 15 lakh people sat in NEET exam. And out of those 15 lakh, 50,000 qualified for government seats. I was one of those 50,000, and everybody who's listening to it right now, who's a doctor right now, even if they are FMGs, that exam is very, very hard to crack. Everybody is a doctor. You have saved lives. You are somebody. I know कि वो उस पूरे कंपटीशन वाले रश में ना भूल जाते हैं कि हम कौन है, what are capable of. And I want people to like pat yourself on the back for going to MBBS, for becoming a doctor. At some point of time, this was your dream. You had no idea कि तुमको इससे भी आगे जाना था. तुम आगे भी जाओगे when you are doing your post graduation or something will come up. Some milestone will feel like a challenge. And in that spot, losing is not what defines you. What you do next is going to define you. And I have learned that the hard way. So I want everybody else to learn that the easy way. सीख लो मुझसे. The only thing that changed in 54 days was not my content. It just changed. It was my changed approach. I'm still the same person जो इसने 2 महीने पहले 14,000 की रैंक लाई थी. I'm still that nobody who was going nowhere in life, who had worsened from last year. ठीक है. I'm not a different person. I have not done any magic or जादू टोना or anything. I just read for the joy of reading. Like do whatever makes you happy. Figure out the rest. जो भी होगा वो देखा जाएगा. जो नहीं कंट्रोल कर सकते हो कहाँ पहुंचोगे यार. क्यों परेशान होना है कि जिंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं.
So I'm just reaching out to people as a personally we Telegram groups pe, people who are disheartened with their rank or something. So I'm like, wait, listen to me. हो जाता है. Please, just This note, don't give up. on this note, we'll actually take the, well, okay, let's just be hopeful and everything will fall into place. Be happy in what you are doing. Don't forget that you are a doctor. Yeah, You are born to save lives. Everyone is born to save lives. And exactly. इस competition में हम भूल जाते हैं. You're absolutely right. In this Hmm. PG competition, tend to forget that who we are. We are amongst those 15 lakh students who wanted to become doctors. We became doctors, and we have the capacity to save lives. And exam तो आते जाते रहेंगे. And जो भी मिले, Exactly. you do really well, and you will do really well, and you Uh-huh. definitely do really well because Yeah, you know, a case of somebody who's from KGMU, graduated this year, I think, and that person is suffering from multiple मतलब ऐसे personality issues like ADHD है, associated depression आ गया है, and very disheartened with everything. कैसे होगा, कैसे करूंगा, मेरे अंदर कुछ नहीं है. So I'm like, you're still the same person who cleared KGMU, right? He's like, yes. So I'm like, okay, then clear me. पेपर ही तो है, सवाल ही तो है, कितना गलत हो जाएगा, इंसान बचा ले तो सवाल कैसे नहीं सॉल्व करोगे. तो like that thing, like I a lot of people I reached out to on Telegram वगैरह, I am fairly anonymous there. तो उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, तो ये भी नहीं पता लड़का हूँ या लड़की हूँ. A lot of people address me as bro and I am accepting that I am bro. तो अभी पता चलेगा. I think I'll take a break here. I'll be, Sure, कि sure. यहाँ पे we'll take this वो and Sure, sure. hope people have enjoyed the interview. एकदम ही unfiltered जिसको कहते हैं ना वो था. Yeah, sure, sure, sure. No barriers hold interview था ये. Like I absolutely, मतलब मैंने पहली बार कोई 1 घंटे का इंटरव्यू लिया होगा, being very honest with you. Oh my God. I just want people to not give up. That's all. Just settle हो जाओ. Give up मत करो. Do well. Save lives. Whatever you do now, whatever decision you are making right now is going to impact lives. अगर तुमको लगता है ना तुम anatomy biochemistry में भी follow करोगे, whatever you decide in that moment, like तुम as a biochemist भी अगर किसी का diagnosis बना के दे रहे हो ना, electrolytes measure करके दे रहे हो, बता के दे रहे हो कि normal है abnormal है, that is going to impact the treatment plan for that patient. Do you realize that? Every decision you are making is going to save a life, no matter where you are. So have that sense of responsibility and go wherever you want to go. Like be happy. That's more important. So on that note, we'll take Okay, a that's end this interview. Be happy, solve for the joy of solving, and never lose hope. And right? perfect. Yeah. All the best to everybody. Best wishes. Like Thank you, Shubhi. Thanks a lot.